Good to see you, students. This is Baqir. इस लेक्चर के द्वारा हम हमारे फिफ्थ चैप्टर व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उस लेक्चर के मदद से हमने जो हमारा चैप्टर 4 था ट्राइबल डिकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, उस चैप्टर का आई होप कि आप सभी को भी मालूम है कि हमने वो कंप्लीट कर दिया है क्वेश्चन आंसर सेशन। और आज हम व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर द फेमस रिवोल्ट ऑफ 1857 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। What was the demand of Rani Lakshmi Bai of Jhansi that was refused by the British? यानी रानी लक्ष्मी बाई झांसी का डिमांड क्या था जो कि ब्रिटिशर्स ने मना किए थे। तो ऑब्वियस बात है, ये तो आप जानते ही हो कि उन्होंने कहा था कि हमारे जो अडॉप्टेड सन है अब उसको किंग मान लो, बट दिस वाज अगेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। Rani Lakshmi Bai of Jhansi want East India Company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. This demand was refused by the British. Next है, what did the British to do protect the interests of those who converted to Christianity? क्वेश्चन आता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट डिड द ब्रिटिश डू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्ट द क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिश ने क्या किया, वो लोग जिनको इंटरेस्ट था टू कन्वर्ट और वो कन्वर्ट हुए इनटू द क्रिश्चियनिटी, उनके लिए ब्रिटिशर्स ने क्या क्या किए। In 1850, a new law allowed an Indian who converted Christianity to inherit the property of his ancestors। ये तो आप सभी को मालूम है कि वो लोग जो कन्वर्ट हुए थे into the Christianity उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉपर्टी दिया गया 1850 के द्वारा। This law made it easier to convert to the Christianity. What objections did the spies have new cartridge as they were asked to use? कौन सा objection था, ये तो आप जानते ही हो। The new cartridge rifle was carried of two things, और that was sacred for Muslim as well as Hindus, क्योंकि हम जानते ही हैं कि new cartridge rifle has suspected to being coated with the fate of cows and pigs, और cows हिंदूज के लिए, pigs मुस्लिम के लिए। तो ये एक इररिलीजियस था समहाउ, इसलिए ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था against this cartridge rifle. The new cartridge were suspect of being caught with the fate of cows and pigs. Both Hindus and Muslim spies were offended by the introduction of these cartridge. These religious sentiments were affected, and this was reason they refused to use the cartridge. They felt that the British were trying to insult their religion. Next question है students, how did the last Mughal emperor live last year of his life? ये तो आप जानते ही हो कि हमारे जो so called बहादुर शाह जफर द king of the last Mughal king जो था, हालांकि हम बहुत सारे लोग रियली किंग नहीं मानते हैं कि क्योंकि अब काफ़ी एज था और उसके समय बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अगेंस्ट बहादुर शाह जफर के अगेंस्ट भी रिबेल किए थे। इस वजह से बहुत सारे लोग नहीं मानते, बट हमें मानना पड़ेगा ये कि बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल किंग। और ये तो आप सभी को अच्छे से मालूम होगा कि आखिर उन्होंने अपनी लाइफ कहाँ गुजारे थे, आखिरी लाइफ दैट वाज इन रंगून जेल विथ हिज वाइफ। द लास्ट मुगल एम्पायर स्पेंट हिज लास्ट ईयर ऑफ हिज लाइफ इन a jail in Rangoon along with his wife. What could be the reason for the confidence of British rulers about their position in India before 1857? कौन सी reasons थे जिससे ब्रिटिशर्स को काफ़ी confidence मिल रहा था? What could be the reasons for confidence of the British rulers about their position 1857 से पहले? बहुत सारे reasons थे students. The reasons for the confidence of British rulers about their position in India before May 1857 were too many as described below. There were several riots and rebellion and revolts which occurred before the 1857, but all these were localized and suppressed by the British then and there.
In mid-18th century, powers of the Nawab, Rajas, Zamindars, etc. were eroded, the freedom of the Indian rulers were reduced, their armed forces were disbanded, and their revenue and territories were taken by states. The Mughal Empire had lost its control over the province. The traditional rulers fought among themselves and could not present unite front against powerful foreign rule. Residents had been sanctioned in many courts by the British as their representatives. These residents kept reforming to the governors about the important developments in every kingdom. Indian princes and chiefs whom the British had allowed to continue use to side with the British during revolt before May 1857. Next question is students, what impact did Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion have on the people and the ruling families? कौन सी impact था बहादुर शाह जफर के support में rebellion and on the people of ruling families? There were what separate of impact on the people and the whole country ruling families after the बहादुर शाह support to the rebellion, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कौन सी बहादुर शाह जफर और उनके फैमिली को जब सपोर्ट किया गया रूलिंग लोगों के द्वारा, तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था पूरे कंट्री के ऊपर और रूलिंग फैमिलीज़। और जब बहादुर शाह ज़फ़र ने रिबेलियन को सपोर्ट किए तो आप जानते ही हो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही ये पूछ रहा है कि कौन से इम्पैक्ट था बहादुर शाह ज़फ़र के सपोर्ट के बाद रिबेलियन को लोगों और उनके फैमिलीज़ के ऊपर, रूलिंग फैमिलीज़ के ऊपर। There was wide separate impact on the people of whole country and the ruling families after the Bahadur Shah Zafar's support to the rebellion. These were, he wrote letters to all chief rulers of the country to come forward and organize confederacy. यहाँ पे एक लाइन है स्टूडेंट्स, कॉन्फेडरेसी का मतलब होता है जैसे बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, एक पावरफुल बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर एक बहुत बड़ा रूलिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाना, दैट इज़ कॉन्फेडरेसी of Indian states to fight with the Britishers. All small and big kingdoms, king, nawab, rajas and princes, zamindars, chiefs and even many Hindu and Muslim religious leaders welcomed its initial step by the emperor and joined hands to the rebel against British. Regiment after regiment mutinied and started to join other troops at the nodal points like Delhi, Kanpur, Lucknow. The people, towns and villages also joined the rebellion in mass and rallied around local leaders, zamindars and rulers who were prepared to regain their lost authority and fight against the British. तो स्टूडेंट्स ये सारे चीज़ें आप कर लेना। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, how did the British succeed in securing the submission of a rebel landowners of Awadh? किस तरह ब्रिटिश कामयाब हुआ securing and submission? Students, how did the British succeed in securing submission of rebel landowners of Awadh? इनमें तो बहुत बड़ा कामयाब मिले थे कि किस तरह उन्होंने सबमिट किया था the rebel landowners of Awadh को. The British succeed in securing the submission of rebel landowners of Awadh by adopting various methods, जैसे कि उन्होंने लिखा था announce for reward for local landowners. They were assured that they would be allowed to continue enjoy the traditional right over their lands. Those who had rebelled were told that if they submitted to the British, if they had not killed any white people, they would remain safe and their rights and claims to the land would not be denied. ये तो ब्रिटिशर्स ने एक क्या कहें, हम ये कह सकते हैं somehow एक कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यही था स्टूडेंट्स। आप अगर गौर से पढ़ेंगे कि व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक, यानी जैसे आगे से आपको कैरेट खिलाना और पीछे से आपके ऊपर स्टिक मारना, वो यही था। उन्हें ये कह दिया कि आप कंटिन्यू कर सकते हो, आप ट्रेडिशनल राइट्स को एंजॉय कर सकते हो, आप ब्रिटिश का अगर साथ दोगे ये चीज़ें। बाद में तो आप जानते ही हो कि किस तरह से अवध को बाद में एनेक्स्ट किया गया था, ठीक है। तो एंड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी वो यहीं यूज़ करते हैं।
तो स्टूडेंट्स, मैं आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है तो किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।